Good morning. Good morning, my dear friends, colleagues, seniors, and our partner Vishalji. Good morning, sir. Good Welcome morning, all sir. of you. Welcome all of you on this beautiful Saturday morning to this virtual launch event. We are privileged to have with us Vishal Gupta, Vice President, RTM and Commercial Capabilities, our own ZBP Cancer, and AVP Richard Smith. Thank you all of you for your time today. There are few things which have changed our life forever. हमारे जिंदगी को बदल के रख दिया. उसमें से पहला था the discovery of fire and the wind. चक्का और आग की आविष्कार. This has changed the lifestyle of our ancestors. This has made our travel lot easier and foods lot tastier. लेकिन ये तो 50,000 साल पहले की बात थी. Today we'll talk about internet. क्या हम एक भी दिन बिना इंटरनेट का सोच सकते हैं? Yes, we are talking about Wabi, an internet-based digital application that has the potential to explore our distribution reach, help NGOs to work in the market, and accelerate business growth. Without further ado, I'd like to invite Vishal Gupta for his words, expectation, and wish. Vishal, welcome. Oh, thank you, Uttam. And good morning, everybody. I would start with saying that we are privileged to be here with the Odisha team, very high on discipline, high on share, and high on scale. And this is another by its for HCCP, it's very proud moment. And Wabi will definitely be a game changer for all of us. I feel that Odisha itself, so launched in East Zone and Odisha specifically, will be another game changer for Wabi itself. So this thing is something which can, take us to a next level. We've seen some good success in the last 3 months, and we are almost, with this launch, we will be the biggest operation for Wabi in the world in 4 months. Wabi has brought HCCB on back. It's been 3 months now, and this is the 4th month done. Wabi is there in a lot of countries, almost 10 countries. It's the same model, or I would say different models, but for the last 2 to 3 years. The kind of scale we've achieved in HCCB in the last 3 months is something which everybody is noticing. And I am sure with Odisha coming in to the picture, it will take it to next step. I will not take more time, but this is one subject which is very close to my heart, and I can say and give you a lot of reasons. I'm sure Uttam, Shubhra, and Richard will take you through those details on how Wabi will help you. Believe me, it will be a game changer for all of us. And just one thing which I want to say, technology helps us. And in the last few years, what technology has done in India is that it has democratized a lot of things which were not visible to people. This again is a revolutionary thing. It will actually enable all our retailers and distributors to gain more visibility to what we do in the market, and in turn it will give us more visibility and scale and more volumes and more revenues. So wish you all the best uh, for this launch. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Thank you, sir. you, Vishal. Absolutely rightly mentioned. We may be the last zone in launching Wabi, but trust me, we promise we are going to be the best zone. With this, I would like to invite our own ZBB Cancer to set the expectation and the way forward. Over to Cancer. Good morning and namaste. Good morning, First of sir. all, I would like to thank Vishal, Richie, and all the friends, those who have joined over online, and all my colleagues from different units, all the sales head and the distribution manager, all the managers, those who have joined. So, दोस्तों, जैसा विशाल जी ने कहा, उत्तम जी ने कहा कि
आविष्कार के बाद आविष्कार होते गए, लेकिन हर आविष्कार का एक महत्व था, ठीक है। और ये भी वाबी अपने आप में एक चमत्कार करने वाला आने वाले टाइम में। और जैसा विशाल जी ने कहा कि हमारा जोन सबसे लास्ट में है, स्टार्ट लास्ट करते हैं लेकिन जो फिनिश करेंगे वो लास्ट नहीं करेंगे, ये हम सब जानते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। और ईस्ट यूनिट के अंदर, इस जोन के अंदर उड़ीसा इज द फर्स्ट यूनिट एंड आप लोग इतिहास रचने जा रहे हो। जो मेरे सामने स्क्रीन पे खड़े हैं खन्ना जी, आप हिस्ट्री का पार्ट बनेंगे, बिकॉज इस जोन के अंदर आपके यहाँ पहली बार लॉन्च हो रहा है। और ये टीम जो सारी वहां पे खड़ी है, ये इतिहास रचने वाली है, क्योंकि आप सब जानते हो कि आप सब लोग पहले हो। ये थोड़ा समय ऐसा है कि हम वहां पे आ नहीं पाए, हम लोग वहां नहीं आ पाए, लेकिन हम आएंगे जरूर। आप लोगों के साथ इस आगाज को, इस जो शुरुआत शुभारंभ है, इसको जरूर सेलिब्रेट करेंगे जब इसको एक मुकाम पे लेके जाएंगे। आप लोगों से लोग बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि जब आप लोग कुछ समय कर लोगे, 7 दिन 8 दिन 10 दिन, तो जो बाकी यूनिट्स के लोग हैं वो आपके यहाँ आएंगे, सीखेंगे, देखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। और ये जिसको कहते हैं ना क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है ये, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। इससे वो मिलेगा क्योंकि अगर कभी हमारे एमजीआर किसी वजह से मार्केट नहीं जा पाते, बीमार है या छुट्टी पे हैं, उसके अलावा अगर उनका रोटेशन है कि 3 दिन में 4 दिन में एक मार्केट उनको कवर करना है, लेकिन वहां पे डिमांड इमीडिएटली आती है, तो उसको समझ ही नहीं आता किसको ऑर्डर देना, कभी एक फोन पे करे, दूसरे पे करे। लेकिन यहाँ पे वो जब चाहे, जितना चाहे वो ऑर्डर प्लेस कर देगा, और आपको अपने आप में पता लग जाएगा कि मेरे पास तो बहुत सारे ऑर्डर आ गए, और आप एक रूट निकाल सकते हो। तो आज की डेट में हम सब भी क्या चाहते हैं कि जब हम कुछ चाहे हमें वो सर्विस मिल जाए। हम भी कंज्यूमर हैं, हम अगर जोमेटो को ऑर्डर करते हैं, स्विगी पे ऑर्डर करते हैं, हमें लगता है यार फटाफट ऑर्डर डिलीवर हो जाए, हम ये नहीं सोचते भी कल जाके कुछ प्लान करेंगे, खाएंगे। तो उसी तरीके से जिस तरह से परिवर्तन आ रहा है समाज व्यवसाय में, ये कोका कोला कंपनी का एक वो कदम है जो सबसे पहले हम सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में तो कह सकते हैं इंडिया के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने उठाया है। और जैसा कि विशाल जी ने बताया, बाकी कंट्रियों में इसको अभी चल रहा है, कर रहे हैं लोग, लेकिन शायद उस लेवल पे नहीं पहुंचे जहां पहुंचना है। और मुझे लगता है कि एचसीसीबी तो जाएगी, लेकिन एचसीसीबी के अंदर जो हमारा जोन है वो लीड करना चाहिए। और हम लोग जाने भी इसलिए जाते हैं, पावर ऑफ एग्जीक्यूशन, जो भी चीजें हम लोगों ने ठान ली है वो की है। और हम सब ये जानते हैं कि हम सबके लिए ये एक सुखद अनुभव। एक चीज मैं जरूर ये कहूंगा, शुरुआती समय में जिसको इंग्लिश में कहते हैं टीथिंग प्रॉब्लम, या जो शुरू में थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं, उसको देख के हमें घबराना नहीं है, उसको देख के समझना है कि ये इनिशियल प्रॉब्लम है। जैसे बच्चा चलता है ना, चलने से पहले किधर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, एक समय आता है जब वो दौड़ने लग जाता है। तो आज हम लोग चलना सीखेंगे, हो सकता है बीच में 2-4 बार गिरेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर चलेंगे, लेकिन हम ऐसा दौड़ेंगे कि सारी दुनिया हमारे पीछे दौड़ रहेगी। तो ऐसा होने वाला है। और मैं इस समय जो स्क्रीन के ऊपर उड़ीसा टीम खड़ी है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई खड़े हैं, मैं सबको तहे दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग सफलता के नए परचम लहराएं और हम सब आपके साथ मिलकर बाद में खुशियां मनाएं। धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Absolutely. We will have several milestones as we start our journey today. Absolutely, I'm confident about that. With this, I'd like to invite Richard Smith. Dear Richard, we are waiting for your words. Over to Richard. Hi, good morning everybody, and apologies, I would want to come on the screen but my network's very low. If I go on the screen, when I start, the voice won't be better. So anyway, I think so Vishal covered everything and even Kayan covered everything. What I would want to say, and I would want to speak in Hindi because I think so that'll help me speak better. So good morning everybody और नमस्ते। ये जो वाबी है, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाऊंगा। अब हमने ये बॉम्बे में लॉन्च किया है, हमने ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया है, तेलंगाना में लॉन्च किया है, चेन्नई में लॉन्च किया है। सो वाबी
हम लास्ट नहीं लॉन्च कर रहे हैं ईस्ट में. ईस्ट इज नंबर 4 in the zone that we are launching Wabi. And the reason being we are launching Wabi in East is only because now we are partially ready with lot of challenges that we had in those 4 locations that we launched. So मैं आपको थोड़ा short में बताता हूँ. The first objective of Wabi while you launch, this is to my MGRs, is please ensure that an account enrolled is not our target. Our target is order download. So when you go in the market, the first enrollment that you do, enrollment is equal to order download. तो हमारा target enrollment नहीं है, हमारा target order download है, पहली बात. So if an MGR has around 90 to 100 outlets, we should ensure visible outlets. We should ensure that we should ensure from day one we download the orders, because you have a DTL who will ensure that his work also starts to deliver that order. So that is one big request. क्योंकि क्या होता है, हम लोग जब ऑर्डर एनरोल करते हैं, हम लोग जब हम वाबी लेके आउटलेट के पास जाके जब एनरोल करते हैं, तो वो एनरोलमेंट के बाद एमजीआर का काम और बढ़ता है, क्योंकि फिर सेकेंड टाइम जाके उसको डाउनलोड करना पड़ता है ऑर्डर, फिर थर्ड टाइम जाके वापस डाउनलोड करना पड़ता है. सो व्हेन यू आर गोइंग टू एन आउटलेट, गो विद अ माइंड दैट एटलीस्ट यू विल डाउनलोड an order of minimum 2000 rupees. So that's the first thing you need to do, because the outlet will only get convinced when he sees that order getting delivered. That is the litmus test. आपने enroll कर दिया, आउटलेट भूल जाएगा, लेकिन आपने उसके साथ ऑर्डर डाल दिया और नेक्स्ट डे अगर वो ऑर्डर उसके दुकान के सामने आया, वो बहुत खुश हो जाएगा. That is the litmus test of our technology. So my one request is that, and we will monitor that. So we will never have an enrollment target. We will have an order download target first. Second thing is, Wabi will help you in also creating new HE. So you can also look at Wabi as a tool where you can give you can go in the outlet, and when you do your munch, you can immediately also put an order if it's required. So it will help you in HE as well. Third important thing is, after doing your market, your visible market, Wabi is the biggest tool for order delivery even in an RSU market. आज के तारीख में there are a lot of RSU markets which is DMS operated and we don't have MGRs. We can also go in the second level and we can install Wabi in those outlets. So the distributor's productivity increases. He exactly knows how much order to send. So this is the second phase. So this is how the journey will happen. So I wish you all guys all the very best. I will be having a meeting every alternate with the team, like we have it with Bombay, we have it with Chennai. तो ये opening करके मैं कहीं नहीं जा रहा. तो मैं हर हफ्ता 3 days we will connect either in the morning or in the evening, have a half an hour session where every STL and MGR will be talking about what are the challenges. We will have the IT person involved in that meeting. I will be there in the meeting. So we are not going to leave you all guys. This is my commitment to Kayan. So we will be there hand holding you all, and rightly said by Kayan sir, we will make East be the best zone among all zones. So that is my commitment. All support Kayan sir. This is my commitment. Thanks a lot. Thank you, Richard. Thank you so much. Absolutely, इस सफर में हम एक साथ चलेंगे, एक साथ दौड़ेंगे और एक साथ पहुंचेंगे भी. Absolutely, thank you. With this, I would like to invite Acharya and Sonal. We'll see a recap of what is Wabi all about, the benefits, advantages of Wabi. Over to Sonal and Acharya. Yeah, thank you, Uttam, and thank you, Vishal sir, Khan sir, Richard sir, for your presence in this beautiful morning. So it is indeed a very special moment for all of us to have you all to launch something which is very important at this stage of our life. So I will be sharing a small
To start with, I will first Sonal will take us through a few slides. So after that, again, I will come and take you through the rest of the slides. So I'm sharing this date. Charida, are you sharing the deck? Yes, I'm sharing the date. You are sharing. Is this visible, Sonal? Just a sec. It is visible, Acharya. Yeah. Yes, Dada, it's come. Yes. Yes, Sonal, over to you. Okay. Very good morning to everyone. And बहुत खुशी हो रही है मुझे वापस अपनी टीम से बात करते हुए. It's a proud moment for me. I had a good association with East when I was there, and I'm really happy to see all of the people I have worked with here in the room at the distributor point, and also to see all the leadership team here. So, very good morning, and एक उज्जवल भविष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं ये वाबी ऐप के लॉन्च की तरफ, और एक नया मुझे इसमें पूरा विश्वास है कि ईस्ट तो डेफिनेटली एक नया माइलस्टोन गढ़ेगा जो कि पहले किसी और जोन में नहीं गढ़ा है, इसमें मुझे पूरा विश्वास है. तो वाबी Wabi2b एप्लीकेशन जो है हमारा वो एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि अभी नया है. ये अभी पिछले 3-4 साल में हमारे यहाँ नहीं था. पिछले 3 साल में इसमें बहुत तेजी से इसने पूरे इंडिया को कैप्चर किया है, और उसमें कोविड के लॉकडाउन के कारण इसमें काफी सारे इसको काफी प्रोत्साहन मिला. तो Wabi2b बिजनेस एक ऐसे मुकाम पे खड़ा है इंडिया में जहाँ पे ये बहुत तेजी से बढ़ सकता है. ये पिछले 3 साल में काफी तेजी से बढ़ा भी है, और ये और तेजी से बढ़ने की इसकी संभावना है. और ये सही मौका है जब हम इसमें इस चेंज मूवमेंट जो चल रहा है इसको अभी इसकी कमान पकड़ के इसमें हम आगे से वी लीड द चेंज फ्रॉम द फ्रंट एंड नॉट बी अडेप्टिंग टू चेंज. तो इसमें Wabi2b बिजनेस जो हमारे इंडिया में है उसमें HCC भी हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं, तो HCC का इसमें क्या योगदान है, क्या प्लान है, इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे. तो HCC का एम है कि Wabi2b से हम अपना RTM राउट टू मार्केट को इम्प्रूव करेंगे. इसमें हम सबसे पहले हम अपने विजिबल आउटलेट्स को टारगेट करेंगे, उसके बाद हम अपने इनविजिबल आउटलेट्स को टारगेट करेंगे, और फिर हम उन आउटलेट्स को टारगेट करेंगे जहां पे HCC पहुंच नहीं रहा है, जहां पे वाबी के हंटर्स पहुंच रहे हैं. इससे हमारा विजिबिलिटी बढ़ेगी, इससे हमारा RTM कॉस्ट टू सर्व करेगा, और इससे हमारे प्रोडक्ट्स और उसके कॉम्बिनेशंस, चाहे वो बस से ब्रांड पैक्स हो, चाहे हमारे अनफॉरगेबल SKUs हो, वो उनका हम इंक्रीमेंटल सेल लेके आ पाएंगे. क्योंकि हम एक आउटलेट को ना केवल MGR के थ्रू पहुंच रहे हैं, ना केवल हम टेलीसेल के थ्रू पहुंच रहे हैं, पर हम अब एक डिजिटल असिस्टेंट के साथ भी पहुंच रहे हैं जिसके साथ हम रिटेलर से सीधे बात कर सकते हैं. तो इसमें कोई हमारे बीच में रिटेलर और हमारे बीच में कोई गैप नहीं रहा है. हम रिटेलर को डायरेक्टली हम अपना स्कीम बता सकते हैं, और अपने कॉम्बोज बता सकते हैं, हम अपने ऑफर्स बता सकते हैं, अपने नए प्रोडक्ट बता सकते हैं. तो एक सीधा डायलॉग शुरू हो गया है हमारे रिटेलर के साथ. इससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, तो अगले स्लाइड में अगर हम देखें तो इससे हमारा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होगा, जैसे कि कैन सर ने कहा था. इसमें एनहांस एग्जीक्यूशन और एक्टिवेशन होगा, क्योंकि हम इसमें प्रमोशन डाल सकते हैं, इसमें लॉयल्टी प्रोग्राम भी हम बना सकते हैं, और इसमें एक ट्रांसपेरेंसी होगी प्राइसिंग और डेटा. यानी रिटेलर भी अपने एप्लीकेशन पे देख सकता है कि कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, स्टॉक नहीं कि कितने स्टॉक नहीं, कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और वो डायरेक्टली ऑर्डर हो सकता है. और प्राइसिंग की भी ट्रांसपेरेंसी की, जो प्राइस हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास है वही प्राइस आपके रिटेलर को भी दिख रहा है कि हमें यही प्राइस पे मिल रहा है. इसमें हमारा ऑप्टिमाइज कॉस्ट टू सर्व है. हम अपने एक आउटलेट को हर तरह के चैनल से पहुंच रहे हैं, चाहे हम उसको डिस्ट्रीब्यूटर और MGR के थ्रू पहुंच रहे हैं, फिर हम अपने होलसेलर के थ्रू पहुंच रहे हैं, हम उसको स्पोक्स के थ्रू पहुंच रहे हैं, हम उसको टेलीसेलर की तरफ पहुंच रहे हैं. अब हम डायरेक्टली रिटेलर को एक डिजिटल ऐप के साथ भी हम पहुंच रहे हैं पास. तो इसमें इस जर्नी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक हमारे कौन से 3
क्रिटिकल पिलर्स हैं जिनके सहारे पे ये प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल हो, और हाउ डू वी इन्फ्लुएंस, हम लोग उनको कैसे हम उनसे बात करें। तो वो 3 क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं हमारे अपने एसोसिएट्स, हमारी फ्रंटलाइन टीम, हमारे एमजीआर एसटीएल एसेंस, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और हमारे रिटेलर। तो हमारे हमारे एसोसिएट को क्या चाहिए, हमारे एसोसिएट को चाहिए बेटर कंट्रोल ओवर मार्केट, it is protection of platinum and gold outlet from competition, दूसरे B2B players, तीसरे wholesalers से हाँ हमारा protection होता है, इससे हमारे कंट्रोल होता है हमारे आउटलेट्स के ऊपर, हमारे एसेट्स के ऊपर, हमारे कूलर्स के ऊपर, और जो भी हम अपने डीएमई एलिमेंट्स प्लेस कर रहे हैं आउटलेट्स के ऊपर, और इससे एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी एक रिलेशनशिप में इजाफा होता है, एक बेहतर रिलेशनशिप बनता है। तो हमारे एसोसिएट के लिए ये एक डिजिटल असिस्टेंट है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को ये एक स्टेबल आरओआई देता है, उसको बेहतर कंट्रोल देता है मार्केट को, और उसका प्रॉफिट बढ़ाता है, क्योंकि इस ऐप से उसको अगर एमजीआर मार्केट में गया किसी कारण से, अगर बीमार है और नहीं जा पाया या छुट्टी पे नहीं जा पाया, तो भी उसको ऑर्डर्स आ जाए, और खासकर ब्रॉन्ज एंड आयरन आउटलेट से स्पेशली आ जाए। एक रिटेलर को क्या मिल रहा है, एक रोबस्ट ऐप मिल रहा है जो कि इंट्यूटिव है, उसको ट्रेन नहीं करना पड़ा हमें कि ये ऐप कैसे तैयार, उसको एक बार दिखा दें बस, उतना ही काफी है। कोई बिग बास्केट में ऑर्डर देने के लिए हमें कोई हैंडेड या हमें कोई मैनुअल की तो जरूरत होती नहीं, चाहे फ्लिपकार्ट हो चाहे अमेज़न। वैसा ही हमने एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान से इस्तेमाल करने वाला एप्लीकेशन हमने यहाँ लॉन्च किया है। प्राइसिंग ट्रांसपेरेंट है, तो देयर इज अ बेटर ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटर एंड द रिटेलर, और डिलीवरी का भी उसको पता चल जाता है कि डिलीवरी कल आ रही है या परसों आ रही है, और एक ही मोबाइल फोन से वो अपने स्टोर की सारी जरूरतों को वो ऑर्डर कर सकता है, चाहे वो आटा, चावल, तेल, साबुन और कोल्ड ड्रिंक है। तो ये पूरा मार्केट प्लेस उसके फिंगरटिप्स पे आ जाता है। तो आचार्य, ओवर टू यू फॉर द नेक्स्ट पार्ट। यस सोना, थैंक यू वेरी मच। इस जगह पे आके एक सवाल सबका मन में आता है कि ये क्यों, तो ये क्यों समझने के लिए कि कुछ डेटा मैं सामने रखना चाहता हूँ। तो when we analyze our internal business data for last 3 years, so we have noticed that there is high volume mix which are moved to some new channels. तो एग्जाम्पल के ओर से अगर मैं देखता हूँ कि in 2017 तो MGR used to generate around 72% of volume mix, जो आज के दिन में in 2021 which reduced to 55%. तो इसका मतलब around 17% of our MGR volume mix which has dropped in last 3 years. So for obvious reason, question arises where this volume has gone. So data says that part of this volume has gone to modern trade, where volume mix changed from 8% to 10%, and some wholesale volume where the volume mix changed from 4% to 19%. And most importantly, the B2B business, which earlier had a mix of very small mix, बहुत छोटा सा mix था 0.004%, वो 2021 में that has reached to 3%. So it has grown exponentially, and here I would like to draw your attention that B2B business has grown almost 11 times in last 3 years. This is very important point that we should note at this stage. तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये बदलाव हमको कैसे इम्पैक्ट करेंगे। तो हम जब मार्केट विजिट करते हैं तो हम देखे हैं कि एक दुकान में जब मैंने जाते हैं तो ढेर सारे सप्लायर वहां पर सप्लाई करने के लिए आते हैं, लाइक होलसेलर्स, B2B चैनल्स, लाइक दिस दे सप्लाई स्टॉक। तो हमको हमेशा ये चिंता लगा रहता है कि हम कैसे अपना वॉल्यूम को प्रोटेक्ट करें। दूसरा ये है कि हम ये भी देखते हैं कि एमजीआर जब अपना प्लान के हिसाब से दुकान पहुंचते हैं तो उसके पहले कोई सप्लायर आके स्टॉक सप्लाई करके चले गए। सो नाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव एमजीआर कवरेज मोर देन 240 plus outlet to maximize volume and thereby
maximize their earning potential. But समय तो फिक्स है, तो इसके अंदर हम ये भी देखे हैं कि ये टाइम प्रेशर में कि ढेर सारे जो कंप्लायंस जो अपना जो है उसको भी अपना कुछ लॉस होता है। तो ये आता है कि एक समय था जिस समय म्यूजिक अगर सुनना था तो हम लोग कैसेट का हेल्प लेते थे। तो नाउ अभी अगर म्यूजिक हमको सुनना है तो हम लोग फोन उठा लेते हैं। एक समय था जब टीवी देखने के लिए केबल का जरूरत पड़ता था, तो आज के दिन में केबल का जरूरत नहीं है, वो भी हम लोग देख सकते हैं अपना मोबाइल में। और आज के दिन में कोक का ऑर्डर भी अगर खरीदारी करने के लिए हमें होलसेल मंडी कोई जाना नहीं है, अपना जरूरतमंद चीज का होलसेल मंडी अपना मोबाइल फोन के अंदर है। Hence, E-B2B is the need of the hour, and we need to lead and win in E-B2B platform in days to come. So, and the kind of commitment and passion this team have shown in the past, which gives me the confidence to introduce Wabi, the mobile application which helps to buy everything in one place. So let's join our hands to make it a big success. So Wabi is the E-B2B application for outlets to order stock from ACCB through a distributor. It is internally connected with DMS. As retailer places their order in this platform, order flows to DMS like SFA and Telcel orders. So the question is how it works. So ACCB supplies stock to distributor, and in turn distributor supplies stock to retailer. So Wabi works in between distributor and retailer, and it works like a virtual MGR who is with the retailer round the clock. And it is as simple as that. As Wabi team is also working, retailer can see other FMCG suppliers also in this application. So अभी कोई भी चीज अगर हम लोग करते हैं तो हमें देखना जरूरी होता है कि व्हाट्स इज इट इन इट फॉर मी, तो जो हमको मोटिवेट करता है कि क्यों हम करें। So let's see what it is there in for me, and everybody is gain something or other from this application. To start with, like MGS, so besides having access to new technology, they will have now additional support to grow volume and revenue. It will act as an additional selling point. और सबसे important है कि with this help MGR can get some extra time for execution, like execution, horizontal expansion, and other lot more other things that will help them to earn more incentive. As we add more outlet in market, Telcel used to help MGR to service market to better. Now Wabi will complement with this. So at this stage, you must be thinking that is this volume will be part of MGR volume or achievement, right? So you are absolutely right. Wabi orders are part of MGR volume and their execution achievement. And the retailer will also be benefited out of this. Retailers can place their order round the clock. They will get assured delivery like routine. Retailers will have visibility of available stock. It's like one-stop shop for all FMCG products. And in coming days, we will introduce B2C app to help consumers to place orders from nearby stores also. And most importantly, our distributor partners will also be benefited out of this. So with this, they will also be part of online channel, and most importantly, as everybody has mentioned, that with this support, additional support,
So additional order generation possibility is there, and we will be able to reach to more number of outlets, which will improve our vehicle productivity and thereby a better return. So everybody is going to be benefited out of this Wabi application. So at this stage, without much ado, I'd like to hand over to Sunil, and I will request him to speak a few words and share some plan, and take us through the on-ground cake cutting ceremony and for the formal launch. So over to you, Sunil. Thank you, sir. Thank you very much. First of all, I would like to thank all my sirs for these valuable insights regarding Wabi, which is definitely going to be beneficial for all of the, means to the retailers, to the distributors, to the organizations and everybody. Thanks a lot, sir. Thank you to all my colleagues present over here who have always been a part to take the organization from good to great. And definitely this pandemic has taught us a great lesson, and we have learned many things to tackle with this pandemic situations. And definitely E2B app Wabi is going to help a lot to the ground team, to the distributors, to the organization, and definitely it is going to be a very useful tool that you can utilize. Here I would like to start with two of my favorite quotes given by my boss. Well begun is half done. So definitely we will begin well today, and definitely we will end to be the best. And another quote is, everything happens twice. First in mind and second is reality. So thank you, sir, that you have put everything in our mind and that we are going to execute in the reality. And we will show you in the near future, sir. You will definitely see the great results that the Odisha team is going to give you, sir. Thank you. Without delay, sir, I would like to invite Atulya, sir, and our esteemed channel partner Vishalji is also here. He will also give his valuable inputs regarding Wabi. And welcome Atulya, sir, and Vishalji. Good morning, sir. Good morning, team. One thing is constant. Change is inevitable. So we have seen in the past DAS, then IDAS, then DMS. Now it is Wabi. So on behalf of Odisha team, I am committing that we will do our best and we will use this Wabi tool in the most effective and efficient way. And one more quotation from my boss, that aim high and achieve high. So definitely we will aim high and we will keep on hammering to use this tool, and we will definitely show the results. Thank you, team. Thank you, sir. Over to Sarmaji. A very good morning to all the esteemed leaders. To be very frank, I had come with a prepared thing, but whatever I heard from Vishalji, Kayanji, as well as Mr. Kaushik, Acharyaji, and rest of the leaders out here. So you have almost summarized whatever I wanted to say. The only thing which I say is that this is a digital revolution for HCCB in East, especially in Odisha. And what we see is that this is a great tool because it's been tried and tested around the world, where it is not only B2B, it is B2C as well as B2 malls. So concepts is also there. So this is just a beginning of a great journey. So, and apart from this, what I see Wabi is that it complements the efforts of our MGRs. When MGRs, whatever was told was that MGRs are absent, will be absent. No, they will never be absent with Wabi being there. So they are always there. They never lose their GRs for the day. So MGRs will be present at any point of time. That's the best thing. Schemes would be directly going to the retailers. Again, a best thing, which will enable them to sell better, earn better, and give us order better, which in return, we are going to also place an order to HCCB and team. So it is an overall growth for each and every one. So we have to, with open arms, we have to grace this moment, and we are very thankful on behalf of Khanna distributors. We are very thankful that you have chosen our place to launch this event. Kayan sir, I will always remember your kind words.
we are a part of this historic moment, and yes, sir, we'll make you proud. From a distributor point of view, we will make East as well as Odisha team proud. Thank you very much. Sir, to start the word cry, you will say one word and we'll all follow by shouting the next word. Yes, sir. And raise a coke. Raise the coke. Open your bottles. Coca. Cola! 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 All the best. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you. Thank you all. Thank you.